नमस्कार दोस्तों, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। यूनी एग्जाम्स आईएएस में आपका स्वागत है। पिछली लास्ट 2 क्लासेस में हमने 2021 एंड 2020 के इकोनॉमी क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स में आए थे उन्हें डिस्कस करा था। तो आज की क्लास में हम 2019 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not included in the assets of a commercial bank in India? Advances, deposits, investments, money at call and short notice. देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इफ यू गो थ्रू ऑल दी ऑप्शंस, आई थिंक ऑप्शन ए, सी, डी ये आते हैं आपके एसेट्स कैटेगरी में, एक्सेप्ट ऑप्शन बी डिपॉजिट्स, ये आते हैं डिपॉजिट्स एंड बोरोइंग्स आपकी लाइबिलिटीज में आते हैं। दिस इज नॉट क्वेश्चन में पूछा गया विच इज नॉट इंक्लूडेड इन दी एसेट्स, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज डिपॉजिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग? इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन, इंक्रीज इन द स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। देखिए 2021 की क्लास अगर आपने देखी होगी मेरी, तो उसमें मैंने मनी मल्टीप्लायर एक्सप्लेन करा था। वन ऑफ द रीजन व्हाई आई एम डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिकॉज ये फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2019 में भी आया है, 2021 में भी आया है। ठीक है, इफ यू हैव नॉट सीन द क्लास प्लीज सी टू इट 2021 क्लास। सो इन द गिवन ऑप्शंस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Increase in the banking habit of the population will increase the money multiplier in the economy. Okay, the next question. What was the purpose of the inter-creditor agreement signed by Indian banks and financial institutions recently? To lessen the government of India's perennial burden of fiscal deficit and current account deficit, to support the infrastructure projects of central and state governments, to act as independent regulator in case of applications for loans of rupees 50 crore or more. Option D, to aim at faster resolution of stressed assets of rupees 50 crore or more which are under consortium lending. देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ये था प्रोजेक्ट अंडर प्रोजेक्ट सशक्त। ये था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ठीक है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय द बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, management of concerned bank. Okay, the correct answer of this question is A, banks board bureau. देखिए ये भी करंट अफेयर्स में था, अगर आपने पढ़ा होगा, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो was formed by the government। इसके फर्स्ट चेयरमैन थे विनोद राय। इसका काम होता है अपॉइंटमेंट MDs, CEOs of public sector banks, LIC, etc. etc. देखिए ये सिर्फ सिलेक्ट करता है, लेकिन अपॉइंटमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट। ठीक है, लेकिन अपॉइंटमेंट करता है बैंक्स बोर्ड ऑफ ब्यूरो। एक और एग्जांपल बताता हूं, जैसे यूपीएससी आपका सिलेक्शन करता है, लेकिन आपकी सर्विस नोटिफिकेशन देता है DOPT, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। ठीक है, so the correct answer of this question is option A, banks board bureau. Okay, the next question, the Reserve Bank of India's recent directives relating to storage of payment systems data, popularly known as data dictate, command the payment system providers that, first option, they shall ensure that entire data relating to payment systems operated by them are stored in a system only in India. They shall ensure that the systems are owned and operated by public sector enterprises. They shall submit the consolidated system audit report to the Comptroller and Auditor General of India by the end of the calendar year.
Which of the statements given above is are correct? देखिए ये भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है. अगर आप मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू गो थ्रू करते हैं तो उसमें ये आ जाएगा. तो in the given question option A first statement is correct, so by that logic your correct answer is option 1A only. ठीक है. Okay, next question. The service area approach was implemented under the purview of Integrated Rural Development Program, Lead Bank Scheme, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, नेशनल स्कीम डेवलपमेंट मिशन. देखिए ये थोड़ा मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन है, आई कैन अंडरस्टैंड. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लीड बैंक स्कीम. ये आरबीआई ने इंप्लीमेंट करी थी इन द ईयर 1989 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज. ठीक है. सो द करेक्ट आंसर इज लीड बैंक स्कीम. Okay, next question. Which of the following is issued by registered foreign portfolio investors to overseas investors who want to be part of the Indian stock market without registering themselves directly? Certificate of deposits, commercial paper, promissory note and participatory note. Again, very easy question. अगर money, banking, finance, BOP, exchange rate अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा participatory note. Those investors who doesn't want to register themselves, वो क्या करते हैं, registered FIIs होती हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने नाम सुने होंगे मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, उसके थ्रू वो इन्वेस्ट करते हैं which is called participatory note. So the correct answer to this question is participatory note. Okay, next question. In India, which of the following review the independent regulators in sectors like telecommunication, insurance, electricity, etc.? First option, ad hoc committees set up by the parliament. Second, parliamentary department related standing committees. Finance Commission, Financial Sector Legislative Reforms Commission, नीति आयोग. देखिए आप इन सबको गो थ्रू कीजिए. देखिए फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में आता है और ये इसमें टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बताता है ये बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स. तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा. फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ये लिमिटेड पीरियड टाइम के लिए सेटअप हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ BN श्री कृष्णा. तो ये ऑप्शन भी नहीं है. नीति आयोग आपका थिंक टैंक होता है, इट इज एडवाइजरी टू द गवर्नमेंट. तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया. So by applying that logic, the correct answer to this question is statement 1 and 2, the option A, 1 and 2 only. Okay. Okay, next question. Among the agricultural commodities imported by India, which one of the following accounts for the highest imports in terms of value in the last 5 years? Spices, fresh fruits, pulses and vegetable oils. Again, current affairs a question है. If you are following the news, the correct answer to this is vegetable oils. Vegetable oils हमारा import का around more than 60% of requirements constitute करता है और इसके last 5 years में 15% increase हुआ है imports. अगर आप न्यूज पढ़ रहे हैं तो well and good. So the correct answer to this question is vegetable oils. Okay, next question. Most of India's external debt is owned by government entities. Second statement, all of India's external debt is denominated in US dollars. Which of the statements given above are correct?
देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज ओड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज, इट इज इनकरेक्ट। प्राइवेट एंटिटीज का is the correct answer. So the first statement is wrong. Second statement, all of India's external debt is denominated in US dollars. Again, it is incorrect. Around 52% US dollars है, around 33% आपका Indian rupees है, around 6% आपका Japanese yen है, अराउंड 4% आपका SDR है। SDR हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। और आपका अराउंड 2%, 3% आपका यूरो है। सो द सेकेंड स्टेटमेंट, ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन डॉलर्स, इज रॉन्ग। सो बाय अप्लाइंग दैट लॉजिक द करेक्ट आंसर इज डी, नीदर 1 or 2. Okay, next question. In the context of India, which of the following factors is our contributors to reducing the risk of a currency crisis? The foreign currency earnings of India's IT sector, increasing the government expenditure, remittances from India's abroad. Select the correct answer using the codes given below. देखिए again currency crisis, balance of payment, करेंसी एक्सचेंज रेट अगर आपने पढ़ा होगा तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए करेंसी क्राइसिस क्या होता है, जब हमारा रुपीज रिड्यूस हो रहा है और डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, उस केस में क्या करना चाहिए, फॉरेन इनफ्लोज को हमें बढ़ावा देना चाहिए। तो इन द गिवन ऑप्शंस बढ़ावा कैसे मिलेगा, फर्स्ट ऑप्शन से एंड सेकेंड ऑप्शन से, और थर्ड ऑप्शन से, आई एम सॉरी, सेकेंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट. So according to that logic, the correct answer to this question is 1 and 3. ठीक है. Next question. Which one of the following is not the most likely measure the government RBI takes to stop the slide of Indian rupee? Curbing imports of non-essential goods and promoting exports, encouraging Indian borrowers to issue rupee denominated masala bonds, easing conditions relating to external commercial borrowing, following an expansionary monetary policy. देखिए अगेन जैसे लास्ट क्वेश्चन में लॉजिक लगाया था हमने, अगर इफ यू आर अवेयर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, करेंसी एक्सचेंज, ऑफ ऑल द गिवन ऑप्शंस, आई थिंक क्वेश्चन में पूछा गया है नॉट द मोस्ट. So the correct answer to this question is D. देखिए if we follow an expansionary monetary policy, उससे क्या होगा, हमारा मनी सप्लाई बढ़ेगा लेकिन डॉलर सप्लाई सेम रहेगा, तो डॉलर स्ट्रेंथ स्ट्रांग होगा, मनी वीक होगा, तो उससे क्राइसिस रुपी डाउन होगा. So that's why the correct answer to this question is option D, following an expansionary monetary policy. Okay, with reference to Asian Infrastructure Investment Bank, consider the following statements. AIIB has more than 80 member nations. India is the largest shareholder in AIIB. AIIB does not have any members from outside Asia. Which of the statements given above are correct? देखिए आपने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जरूर सुना होगा करंट अफेयर्स में, आपकी टेक्स्ट बुक्स में. तो AIIB has 97 members. ठीक है, the first option is correct. India is the largest shareholder in AIIB. This statement is wrong. Largest shareholder has of China, around 31%. इंडिया का शेयर है around 8.67%. So India is the second largest shareholder, not the first. China is the largest shareholder. Again, third statement, AIB does not have any members from outside Asia. This statement is also wrong. इसका member UK भी है, स्विट्जरलैंड भी है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी है, and many more. Okay, so the correct answer to this question is option A, 1 only.
Okay, question number 14. Consider the following statements. Purchasing power parity exchange rates are calculated by the prices of the same basket of goods and services in different countries. In terms of PPP dollars, India is the sixth largest economy in the world. देखिए आपने purchasing power parity सुना होगा. लेमैन लैंग्वेज में इसे समझाया जाए तो purchasing power parity होता है किसी दो कंट्रीज की एक्सचेंज रेट को हम अगर कंपेयर करेंगे सेम बास्केट ऑफ गुड्स में, उसे कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बताऊं, जैसे हमारे यहाँ अगर एक चाय का दाम है ₹10 इंडिया में और यूएसए में 1 चाय इक्वल्स टू $1. सो अगर पीपीपी डॉलर्स इंटू रुपीज हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम अराउंड 10. 2021 में परचेजिंग पावर पैरिटी डॉलर टू रुपी है अराउंड 21.62. ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं अगर आपको करना है तो. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. Second statement, in terms of purchasing power dollars, India is the sixth largest economy in the world. This statement is incorrect. India is the third largest economy in the world according to purchasing power parity. Around $8.97 ट्रिलियन का है. और अगर हम इसको जीडीपी में कन्वर्ट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो इट इज अराउंड 2.66 ट्रिलियन. So according to PPP, we are third largest. According to GDP, we are sixth largest. Question में पूछा गया था PPP. So this statement is incorrect. So the correct answer to this question is option A. Okay, next question. The economic cost of food grains to the Food Corporation of India is minimum support price and bonus, if any, paid to the farmers plus transportation cost, interest costs only, procurement incidental and distribution cost, procurement incidental and charges for godowns. देखिए जो टोटल कॉस्ट होती है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. प्रोक्योरमेंट कॉस्ट, प्रोक्योरमेंट प्राइस जिसे हम एमएसपी बोलते हैं. आप लोग सभी जानते होंगे एमएसपी क्या होता है. और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, आपका ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, एटसेट्रा एटसेट्रा. So of the given options, C, distribution cost, procurement incidental and distribution cost. So the correct answer to this question is option C, procurement incidentals and distribution costs. Okay, the next question. The Global Competitiveness Report is published by the International Monetary Fund, United Nations Conference on Trade and Development, World Economic Forum, World Bank. देखिए ये रिपोर्ट्स हर साल आती हैं तो आपको बाय हुक या बाय क्रुक आपको लर्न करनी चाहिए. तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट. Okay, next question. Which of the following is not a sub-index of the World Bank's Ease of Doing Business Index? Maintenance of law and order, paying taxes, registering property, dealing with the construction permits. I think of why this question came, because ease of doing business का जो इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हो जा रही है. 2021 में इंडिया की रैंक वाज अराउंड 63 आउट ऑफ 190 कंट्रीज. अगेन इंप्रूव हुई है तो क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है. तो इन द गिवन ऑप्शंस इसमें नॉट पूछा गया है. द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन पार्ट्स आर पार्ट ऑफ.
Next question. Atal Innovation Mission is set up under the Department of Science and Technology, Ministry of Labor and Employment, Niti Aayog, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Again, very easy question. ये bonus questions होते हैं. So the correct answer to this question is Niti Aayog. Okay, next question. Consider the following statements. According to the Indian Patents Act, a biological process to create a seed can be patented in India. Second option, in India, there is no intellectual property appellate board. Third, plant varieties are not eligible to the patented in India. देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट में देखा जाए अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट्स एक्ट अ बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट अ सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया. इट्स इनकरेक्ट. जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के पेटेंटेबिलिटी है वो एक्सक्लूड किए गए हैं. So the first statement is incorrect. In India, there is no intellectual property appellate board. This is absolutely incorrect. 2006 में इस बोर्ड का गठन हुआ था. 2016 तक ये आती थी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी में. 2016 ऑनवर्ड्स अब ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर आती है. ठीक है. तो इंडिया हैव दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी appellate board. The second statement is also wrong. Plant varieties are not eligible to the patented in India. This statement is correct. So the correct answer to this question is option C, 3 only. Okay, next question. As per the Industrial Employment Standing Order Central Amendment Rules 2018, first statement, if rules for fixed term employment are implemented, it becomes easier for the firms companies to lay off workers. No notice of termination of employment shall be necessary in the case of temporary workmen. Which of the statements given above are correct? देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं तो ये मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में आते हैं. अगर आपने ये रूल पढ़ा है तो आपको आता है, वरना आपको नहीं आता है. So in this question, first both statements are correct. So option C, 1 and 2 is the correct answer. Okay, with reference to India's 5-year plans, which of the following statements are correct? From the second 5-year plan, there was a determined thrust towards substitution of basic and capital good industries. The fourth 5-year plan adopted the objective of correcting the earlier trend of increased concentration of wealth and economic power. In the fifth 5-year plan, for the first time, the financial sector was included as an integral part of the plan. देखिए अगेन मॉडरेट टफ क्वेश्चन है. अगर हमने पूरे 5-year plans ढंग से पढ़े होंगे तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे. So first two statements are correct. In the third statement, in the 5th-year plan, for the first time, the financial sector was included. Financial sector ये include नहीं किया गया था. So the third statement is incorrect. So the correct answer to this question is A, 1 and 2 only. Next question. Which of the following statements are correct regarding the Maternity Benefit Amendment Act 2017? Pregnant women are entitled for the 3 months pre-delivery and 3 months post-delivery paid leave. Enterprises with creches must allow the mother minimum 6 creche visits daily. Women with 2 children get reduced entitlements. Select the correct answer using the code given below. देखिए मैटरनिटी बेनिफिट आप लोगों ने करंट अफेयर्स में बहुत पढ़ेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा और इन्होंने थोड़ा डीप पूछा गया है, तो थोड़ा मॉडरेट एंड टफ क्वेश्चन बना. देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं. प्रेग्नेंट वुमेन आर एंटाइटल्ड फॉर 3 months प्री डिलीवरी एंड 3 months पोस्ट डिलीवरी पेड लीव. दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. आई थिंक
8 weeks before the delivery date, you get paid leave. So the first statement is incorrect. Second statement, enterprises with crèches must allow the mother minimum 6 crèches visits daily. This statement is also incorrect. देखिए crèches तब होना चाहिए जब ऑर्गेनाइजेशन में 50 और मोर पर्सन्स होंगे, और 6 नहीं, 4 visits a day is permissible. So second statement is also wrong. Third statement, women with 2 children get reduced entitlements. This statement is absolutely correct. First 2 children के लिए you get 26 weeks. And after that, if you have a child, then 12 weeks you get. तो आपका reduce होता है. This statement is absolutely correct. So the correct answer to this question is option C, 3 only. Next question. Consider the following statements. Petroleum and Natural Gas Regulatory Board is the first regulatory body set up by the Government of India. One of the tasks of PNGRB is to ensure competitive markets for gas. Appeals against the decisions of PNGRB go before the appellate tribunals of electricity. Which of the statements given above are correct? देखिए, this is a very tough question because ये PNGRB थोड़ा लो प्रोफाइल है, इतना करंट अफेयर्स में पूछा नहीं गया होगा, लेकिन देखते हैं इसको कैसे टैकल करते हैं. नाउ लुक एट द फर्स्ट स्टेटमेंट. PNGRB is the first regulatory body. PNGRB was set up in 2006. अगर आप इकोनॉमी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा सेबी 1988 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, एक्ट में 1992 में आया था, SEIRDAI बना था. सो विद दैट लॉजिक स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. So by applying that logic, option A, C and D, they get cancelled. So the correct answer to this question is option B, 2 and 3 only. तो कभी कभार कुछ वेग वर्ड्स, एक्सट्रीम वर्ड्स, फॉर एग्जांपल फर्स्ट, ये इससे मदद मिल सकती है एग्जाम क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए. Okay, next question. Consider the following statements. Coal sector was nationalized by the government of India under Indira Gandhi. Now coal blocks are allocated on lottery basis. Till recently, India imported coal to meet the shortages of domestic supply, but now India is self-sufficient in coal production. Which one of the following statements above are correct? देखिए, with regard to second statement, coal blocks are allocated on lottery basis. This statement is incorrect. अब आजकल इसका ई ऑक्शन होने लग गया है, एंड बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज दे कैन पार्टिसिपेट इन इट. सेकेंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट. थर्ड, टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल. इंडिया इज स्टिल इंपोर्टिंग कोल फॉर इट्स इंडिजिनस यूज. एंड लास्ट डेकेड में 3.5 टाइम्स हमारा कोल का इंपोर्ट इंक्रीज हुआ है. सो अगेन दिस सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, 1 only. Okay, with reference to the management of minor minerals in India, consider the following statements. Sand is a minor mineral according to the prevailing law in the country. State governments have the power to grant mining leases of minor minerals, but the powers regarding the formation of rules related to the grant of minor minerals lie with the center government. State governments have the power to frame the rules to prevent illegal mining of minor minerals. Okay, again, moderate to tough question. देखिए, अगर आपने minor minerals पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में कहीं भी तो समझ में आता है, लेकिन थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन है. देखिए, माइनिंग मिनरल्स ये आता है यूनियन लिस्ट में, बट माइनर मिनरल
ये आता है स्टेट लिस्ट में, ठीक है। जो सेकंड स्टेटमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीजेस ऑफ माइनर मिनरल्स बट द पावर्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल्स टू लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेट के अंडर आता है, ठीक है। द सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, so option A 1 and 3 is the correct answer. Okay, next question. In a given year in India, official poverty lines are higher in some states than in other because poverty rates vary from state to state, price levels vary from state to state, gross state product varies from state to state, quality of public distribution varies from state to state. ऑफिशियल पॉवर्टी लाइंस, देखिए गवर्नमेंट ऑफिशियल पॉवर्टी लाइंस कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज प्राइस लेवल्स के आधार पे हम पॉवर्टी लाइंस डिसाइड करते हैं। देखिए प्राइस लेवल स्टेट स्पेसिफिक होती है, और इसे कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स for agriculture labors, एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ये हम रूरल एरिया में यूज करते हैं, इसको हम अर्बन एरिया में यूज करते हैं। इसके तहत हम पॉवर्टी लाइंस को डिसाइड करते हैं। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज प्राइस लेवल्स। प्राइस लेवल्स के आधार पे हम पॉवर्टी लाइंस डिसाइड करते हैं। Okay, next question. In the context of any country, which one of the following would be considered as part of its social capital? The proportion of literates in the population, the stock of its buildings, other infrastructure and machines, the size of the population in the working age group, the level of mutual trust and harmony in the society. देखिए अगर आपने 12th की सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं पढ़ी तब भी देखते हैं। देखिए द वर्ड है सोशल कैपिटल, द वर्ड है सोशल। इसके सिमिलर इन चारों ऑप्शंस में कौन सा वर्ड आपको मिलता जुलता लग रहा है? दैट वर्ड इज सोसाइटी। तो ऐसे भी क्वेश्चन को डील करा जा सकता है। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, the level of mutual trust and harmony in the society. Okay, that's all for today friends. आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब भी करें एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।